Hello, dear students. Welcome back to a news channel. Students, today's episode is like it's a mix of movies, culture, and in the first, we'll step into the world of cinema. We'll explore India's most prestigious film awards, National Film Awards, and we'll see where they actually began, what they stand for. Okay, and next we'll meet the winners of the 71st National Awards. And then finally, we switch from reels to ancient relics, where we uncover the incredible story of Piparwaha uh, gems. These are basically Buddhist treasures taken from India over a century ago, and how now they are, finally returned home through public private partnership. Okay, so students, before we celebrate the winners, let's rewind a bit. Now, do you know what the most important film award in India is? Well, many people uh, they immediately think of the Filmfare Awards, but that's more of a popular entertainment award. The national awards, on the other hand, are the country's official recognition of excellence in cinema, and it is decided by a government appointed jury, not by public voting. ठीक है, जो गवर्नमेंट एक जूरी अपॉइंट करती है तो फिर वो सेलेक्ट करती है. अब अगर हम नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो नेशनल अवार्ड स्टार्टेड इन द ईयर 1954. Now that's even before India had color television. इससे पहले इंडिया कलर टेलीविजन थोड़ी ना था. ब्लैक एंड वाइट मूवीज होती थी, ब्लैक एंड वाइट सब कुछ होता था. सो तब ये इस्टेब्लिश किया गया, एंड दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड सिंस 1973 by the Directorate of Film Festivals. Directorate of Film Festivals 1903. It's a part of the of Ministry of Information, Ministry of Information and Broadcasting. Okay, so the same body also runs the International Film Festival of India and Indian Panorama. Now, what makes these awards special is that, students, uh, that they recognize films across India. ठीक है, तो जो पूरे इंडिया में जो बनती है, इंडिया में जो बनती है, जैसे सिर्फ बॉलीवुड नहीं, रीजनल मूवीज भी जो बनती हैं, जैसे हिंदी हो गया, तमिल हो गया, बंगाली, मलयालम, एसमीज, in many other languages. So whether it's a blockbuster or a small regional gem, the awards focus on quality, creativity and cultural value. ठीक है, तो उसमें कुछ टाइप ऑफ विनर्स है, जैसे टाइप ऑफ अवार्ड्स कौन कौन से, जैसे इसमें विनर्स को स्वर्ण कमल मिलता है, राइट. Swan Kamal or Golden Lotus Award is given for categories like, Best Feature Film, Best Direction, and others get the Rajat Kamal Silver Lotus Award for acting, technical skills. इसमें से एक जो दादा फाल्के अवार्ड होता है, इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर, एंड इट इज़ गिवन टू समवन फॉर देयर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमास, एंड पास्ट में काफ़ी सारे लोगों को मिला है. सो अब हमें बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया, अब हम विनर्स का देखते हैं. So this year's awards announced in, of course, New Delhi, and it had a mix of big stars, unexpected winners, and some meaningful cinema. So is uh, best feature film award is given to 12th Fail. 12th Fail. Now, if you have not seen this movie, so you can watch it. Actually, it's a very good movie. It's a movie about perseverance and hard work, inspired by a true story of an IPS officer. तो आप ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छी मूवी है. एंड उसके जो लीड एक्टर हैं विक्रांत मैसी, और साथ ही साथ उन्होंने अवार्ड शेयर किया शाहरुख खान के साथ. सो दिस इज द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इज गिवन टू विक्रांत मैसी, राइट. अब यहाँ पे पूरी देखो लिस्ट मेंशन है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, राइट, कि बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म कौन सी है और किसको मिला है बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड, गिद्ध द स्कैवेंजर, राइट. So you can just go through it.
लाइक बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इसको मिला है, बेस्ट फीमेल एक्टर अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे. ऑल राइट, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. एंड रीजनल फिल्म्स भी हैं काफ़ी सारी. नाउ द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाई दिस मैटर्स? बिकॉज national film awards, they aren't just about trophies. They boost the careers of actors, directors, and they encourage the making of diverse meaningful cinema across India. क्योंकि देखो काफ़ी सारी रीजनल मूवीज़ को भी अवार्ड मिलता है, उनको भी, उनकी भी क्वालिटी, उनके भी जो कंटेंट है उसको ध्यान में रखा जाता है. सो yes, apart from the glitter of the film industry, they also consider the quality content, और क्या मैसेज, सोशल मैसेज क्या दिया जा रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अवार्ड्स दिए जाते हैं. राइट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. यस. सो now students, imagine there's a treasure box which is buried for centuries, and it has jewels, caskets, and even sacred relics, and it is believed to belong to Lord Buddha. Now imagine that this treasure being taken away during colonial times, and it is kept in a foreign family's possession for over 100 years. And now it is finally returning home to India. So that's the story of Piparwa gems. And Piparwa gems, basically, it was uh, in its discovery was made in year 1898. Okay, so in 1898, William Claxton Pep, and he was what you can call him, an English estate manager. Okay, so he was an English estate manager in Piparwa, and this is a village in Uttar Pradesh near Nepal border. Okay, तो अब उस टाइम पे क्या हुआ, तो he dug up a Buddhist stupa, and he found a collection of sacred relics जैसे उसमें bones थे, ashes थे, caskets थे, gemstones थे, and some of these believed to be relics of Lord Buddha. So they were gifted by the then viceroy to the king of Siam. King of Siam मतलब थाईलैंड को. And others were sent to what is now the Indian Museum in Kolkata. But a part of the collection remained with the Pepe family in England, and it was passed down through generations. So what happened this year, May में क्या हुआ? Sotheby's Hong Kong announced that it would auction 349 gemstones from the Piparwa collection, और उसका estimated value था 100 million. राइट. तो इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थे, उन्होंने इमीडिएटली लीगल नोटिस सेंड किया कि भाई कि इस सेल को रोकना चाहिए, बिकॉज मिनिस्ट्री आर्ग्यूड दैट द रेलिक्स वर पार्ट ऑफ इंडियाज हेरिटेज, तो उसको ऑक्शन क्यों करा जा रहा है. So, however, students, there was a certain legal area, gray area, because the relics had been taken before there was a law. इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद एक कोई लॉ आया था, जैसे इंडियाज एंटिक्विटीज एंड ट्रेजर एक्ट 1972. सो दिस मेड इट हार्ड टू प्रूव इलीगैलिटी. ठीक है. अब सोल्यूशन क्या निकाला गया फिर? गवर्नमेंट ने, देखो कितना अच्छा सोल्यूशन निकाला. गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको वापस लाया गया. सो इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट बाइंग देम, which could be seen as paying for stolen heritage, Indian industrialist Piroj Shah Godrej, yes, Piroj Shah Godrej purchased the gems privately and agreed to loan most of them to the National Museum for 5 years. And the full collection will be on display for 3 months. Now, why is this important? Because students, cultural heritage isn't just about objects, it's about identity, history, and pride. So the return of Piparwa gems shows that sometimes saving heritage requires teamwork between गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सिटीजन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, ऑल राइट. तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे हेरिटेज को सिक्योर करना, कंजर्व करना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
Okay, so students, from film awards that celebrate creativity to, ancient relics, today's news reminds us that culture comes in many forms and it's worth preserving, whether it's on a cinema screen or in a museum. So that's it for today's episode. Students, next time when you are watching a film or visiting a museum, remember every award and every artifact carries a story. And those story connect us to something bigger than ourselves. Until next time, keep learning, keep asking questions, and stay curious. Bye bye.